In the heart of the Western Ghats, among the dense forests and thriving greenery, there exists a mysterious creeper. Stories have been told about this plant, stories so strange that they seem almost unbelievable. Yet, in a land where nature is both feared and revered, not all stories can be dismissed as mere fiction. This is the story of one such creeper, a medicinal plant with secrets hidden for decades. It began in the plantation, where Mara and Santa were busy working. While tending to the coffee seed bed, Santa plucked a creeper, unaware of its significance. Mara, filled with anger, scolded Santa for being careless. This creeper, Mara explained, was no ordinary plant. It held powers beyond their understanding, a medicinal wonder hidden in plain sight. Curiosity drove them deeper into the forest. With Mara leading the way, they reached a clearing where the elusive creeper was found. Without hesitation, Mara tied it to a nearby tree, calling it the thief. According to him, the plant was cursed by a sage, destined to hide from those in need. The writer listened, intrigued but skeptical. Was this just another tall tale, or was there truth lurking behind the folklore? The writer offered a more practical explanation. Perhaps the creeper wasn't cursed after all. It seemed to appear with the rains, grow quickly, and then vanish just as fast. A natural cycle, nothing more. But despite this rational theory, the writer couldn't help but wonder if there was something more to the plant, something that would be lost beneath layers of myth and misunderstanding. Mara had more stories to tell. He recounted a time when he had cut his hand while harvesting bamboo. The wound was deep, but a stranger handed him a leaf to bandage it. By the time he reached the white man for treatment, the wound had vanished without a trace. The white man, suspicious at first, was stunned when he saw the healed hand. He offered Mara his entire estate if he could find the plant again. But Mara, despite searching the forest all day, could not find it. Mara's stories continued. He spoke of cow-cows, the large crow-like birds known for their intelligence. He had seen them bitten by snakes only to chew the leaves of the creeper and recover almost instantly. How could such a small plant hold the power to cure a deadly snake bite? The writer listened, skeptical, yet the story stayed with him. There was one more strange tale. One morning, while hunting, Mara brushed his teeth with a twig from the forest, but as soon as he did, the teeth on one side of his mouth began to fall out. In a panic, he threw away the twig and washed his mouth. Yet, when asked to show the plant, Mara claimed it was impossible to find it among the thousands in the forest. The writer laughed, teasing Mara about finding a plant to restore his youth, but Mara simply replied, "I don't want to get married again." Mara's stories took on a life of their own. He told of a time when he and his friends hunted a barking deer. After dividing the meat, they wrapped it in special leaves. But to their amazement, the deer came back to life, leaping out of the house when the leaves were removed. His wife, unaware of the leaves' value, had thrown them into the fire. It was another fantastic tale, impossible to believe, yet somehow captivating. Years passed. The writer, having almost forgotten Mara's stories, encountered the creeper again, this time with a panna. But Apana's version was different. He claimed the leaves could harden milk. Intrigued, the writer tested this theory with his friend, Chandru, a plant pathologist. To their surprise, the milk thickened and became rubbery. There was no doubt the creeper had unique properties. But what else could it do? The creeper reappeared once more, this time with a farmhand named Krishna. Pale and breathless, Krishna explained, he was passing blood with his stool. The doctors had recommended surgery, but Krishna was afraid. Desperate, he remembered the advice of a Malayali sadhu who had once cured him with herbs. The sadhu described a plant, the same creeper that Apana had shown the writer. With hope,
Krishna consumed the ground tuber of the creeper mixed with milk. In just 5 days, Krishna was completely cured. The writer, curious, had also tasted the root of the plant. For months, he had been suffering from a painful swelling near his heel, one that even doctors suggested surgery for. Yet, after consuming a small piece of the root, the pain vanished and the swelling disappeared. Was this coincidence, or was there truly something miraculous about the plant? Despite these experiences, doubt lingered. The writer wondered if the cure was real or just a fluke. Even if the plant had medicinal properties, it was impossible to know what exactly it could heal. This secrecy, this reluctance to share knowledge, was one of the reasons why India's native medicinal practices were slowly disappearing. The writer pondered the lost wisdom of these ancient systems, knowing that, without change, they would soon be forgotten. पश्चिमी घाट के घने जंगलों के बीच हरियाली से घिरी एक रहस्यमयी बेल पाई जाती है। इस बेल के बारे में कई कहानियां कही जाती हैं, ऐसी कहानियां जो सुनने में अविश्वसनीय लगती हैं। लेकिन इस धरती पर, जहां प्रकृति को डर और श्रद्धा के साथ देखा जाता है, सभी कहानियां झूठी नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसी औषधीय बेल की, जिसके रहस्य सालों तक छिपे रहे। ये कहानी शुरू होती है एक बागान में, जहां मारा और सन्ना काम कर रहे थे। कॉफी के पौधों की देखभाल करते हुए सन्ना ने एक बेल को तोड़ दिया, जिसका महत्व उसे पता नहीं था। मारा गुस्से में आ गया और सन्ना को लापरवाही के लिए डांटने लगा। मारा ने समझाया कि यह साधारण बेल नहीं है, यह एक औषधीय बेल है, जिसके गुण इंसानी समझ से परे हैं। जिज्ञासा ने उन्हें जंगल के अंदर और गहराई तक खींच लिया। मारा के साथ लेखक और सन्ना उस जगह पहुंचे जहां वह रहस्यमयी बेल मिली। मारा ने बिना कोई देरी किए बेल को पास के पेड़ से बांध दिया और उसे चोर कहा। मारा का मानना था कि इस बेल पर एक आर्षि का श्राप था, जिससे यह उस वक्त गायब हो जाती जब लोग इसे ढूंढते। लेखक ने ध्यान से सुना, लेकिन मन ही मन इसे एक और कहानी समझ रहे थे। क्या यह सिर्फ एक गप्प थी या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी थी? लेखक ने एक साधारण स्पष्टीकरण दिया। शायद यह बेल श्रापित नहीं थी। यह बारिश के साथ आती, जल्दी बढ़ती और फिर अचानक गायब हो जाती। यह एक प्राकृतिक चक्र था, कुछ और नहीं। लेकिन लेखक अब भी सोचते थे कि इस बेल में कुछ खास था, जो लोक कथाओं में खो सकता था। मारा ने एक और दिलचस्प कहानी सुनाई। एक बार उसने बांस काटते समय अपना हाथ काट लिया था। घाव गहरा था, लेकिन किसी अजनबी ने उसे एक पत्ता दिया, जिससे उसने घाव को बांध लिया। जब वह इलाज के लिए गोरे आदमी के पास पहुंचा, तो घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका था। गोरे आदमी ने यह देख हैरानी जताई और मारा से वह पौधा ढूंढने को कहा। लेकिन पूरे दिन जंगल में खोजने के बावजूद मारा वह पौधा नहीं ढूंढ पाया। मारा की कहानियां यहीं खत्म नहीं हुई। उसने कौवकाल नामक चिड़ियों के बारे में बताया, जो सांप के काटने के बाद उसी बेल के पत्तों को चबाकर ठीक हो जाती थीं। इतनी छोटी सी बेल में इतनी ताकत कैसे हो सकती थी कि वह एक जहरीले सांप के काटने का इलाज कर सके? लेखक इस कहानी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी कहानी उनके मन में बनी रही। मारा की एक और अजीब कहानी थी। एक सुबह शिकार पर जाते वक्त उसने जंगल में एक पौधे की टहनी से दांत साफ किए, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके मुंह के एक तरफ के दांत गिरने लगे। घबराकर उसने टहनी फेंक दी और पानी से कुल्ला किया। जब लेखक ने उस पौधे को दिखाने के लिए कहा, मारा ने कहा कि इतने सारे पौधों के बीच उसे ढूंढना नामुमकिन था। लेखक हंसते हुए मारा से मजाक करते हैं कि वह पौधा शायद उसकी जवानी भी लौटा दे, लेकिन मारा ने कहा, मुझे फिर से शादी नहीं करनी। मारा की कहानियों का सिलसिला चलता रहा। एक बार उसने और उसके दोस्तों ने एक भौंकने वाले हिरण का शिकार किया। उन्होंने उसे खास पत्तों में लपेटा, लेकिन जब पत्ते हटाए गए तो मृत हिरण फिर से जीवित हो गया और घर से बाहर भाग गया। मारा की पत्नी, जो उन पत्तों के महत्व को नहीं समझती थी, ने उन्हें जला दिया। यह एक और अद्भुत कहानी थी। विश्वास करना मुश्किल था, फिर भी दिलचस्प। सालों बाद लेखक को वही बेल फिर से मिली, इस बार अपन्ना के साथ।
लेकिन अपन्ना की कहानी कुछ अलग थी। उसने बताया कि बेल के पत्ते दूध को गाढ़ा कर सकते हैं। लेखक ने इसे अपने दोस्त चंद्रू, एक पौधा विशेषज्ञ, के साथ आजमाया। आश्चर्यजनक रूप से दूध गाढ़ा और रबर जैसा हो गया। अब लेखक को यकीन हो गया कि इस बेल में कुछ खास था। लेकिन क्या यह बेल एक बार फिर प्रकट हुई, इस बार कृष्णा के साथ, जो लेखक का खेत मजदूर था। कृष्णा बहुत बीमार था और डॉक्टरों ने उसे सर्जरी की सलाह दी थी, लेकिन वह डर गया था। उसे एक मलयाली साधु की याद आई जिसने उसे पहले भी जड़ी बूटियों से ठीक किया था। साधु ने जिस पौधे का वर्णन किया वह वही बेल थी जिसे अपन्ना ने लेखक को दिखाया था। उम्मीद से भरे कृष्णा ने बेल की जड़ का रस दूध के साथ पी लिया। सिर्फ 5 दिनों में कृष्णा पूरी तरह ठीक हो गया। लेखक ने भी इस बेल की जड़ का छोटा टुकड़ा छका। महीनों से उनके पैर की एड़ी में सूजन और दर्द था, जिसके लिए डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी थी। लेकिन इस जड़ को खाने के बाद दर्द गायब हो गया और सूजन भी खत्म हो गई। क्या यह महज एक संयोग था या वाकई इस पौधे में कोई चमत्कारी गुण था? इन अनुभवों के बावजूद लेखक के मन में शंका बनी रही। क्या यह इलाज असली था या सिर्फ एक इत्तेफाक? अगर इस बेल में औषधीय गुण थे भी तो यह कहना मुश्किल था कि वह किस प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकती थी। भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों के इस गुप्त स्वभाव के कारण यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। लेखक सोचते हैं कि अगर हालात नहीं बदले तो ये प्राचीन ज्ञान हमेशा के लिए खो जाएगा।